Guys, Big Bucks is back, and today we saw an amazing game. I can say the first close game of the World Cup, Pakistan versus South Africa. And Pakistan batted first. They got all out in like 46 overs, and then they were bundled out for 270. And then South Africa, they tried to hold on with their choker stack, but still they managed. And ultimately, it was Keshav Maharaj who took Yeah, them home, and amazing celebrations from Maharajji. So, so guys, do you think we can still call South Africa chokers or not? I think it's safe to say they're still. They just escaped the jail. देखो उन्होंने So, 1999 वाला पाकिस्तान वाला अपना टैग uh, हटा दिया है, बट अगेन पाकिस्तान वाला टैग हटाया है यार। yeah. Sid, 1999 में पाकिस्तान वाला अटैक भाई वो लास्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 1999 में जीते थे, ओह तो वो एक जिंक्स उन्होंने तोड़ दिया। Sid कह रहे हाउ इज इट पॉसिबल? ऑनेस्ट हो रहा भाई। yeah, but I mean, I think like वो बड़े गेम में अभी भी चोक कर सकते हैं, but Yeah. उनके the problem is if what we have discussed, उनके top 3 अगर जल्दी out हो गए, they're gonna lose. Yeah. So it's just matter of time. जैसे इंडिया का बेस्ट लग रहा है that they failed in Australia game. They had like today was another day. So they're putting their failures behind. South Africa has not yet, only one against Netherlands. But I feel big match में they can still choke easy. Yeah. या सो एक और क्वेश्चन इससे ये उठता है, जो मुझे आज गेम देखते हुए भी रियलाइज हो रहा था, और लाइक और भी लास्ट मैंने पाकिस्तान के 1-2 गेम्स और देखे, उसमें भी ये रियलाइज हुआ था, यार इज बाबर द वर्स्ट कैप्टन एवर to don the Pakistani jersey in ODI? At least in this tournament 100%. I have an answer. Level ही कुछ और है. भाई की कैप्टनसी का लेवल ही कुछ Level ही कुछ और है. क्या हुआ? Sid, तू क्या बोलता है यार? Like don't you think like it's the worst captaincy I've ever seen यार? Yeah, like guys, from day one, I'm just saying they have the worst everything, I guess. Like Simon Dole. Simon Dole said it publicly. It's like the worst spinning attack, the worst fast bowling, the worst batting, and on top, icing on the top, Worst the captaincy. worst captain too. So भाई कैप्टनशिप तो इतनी गंदी की उस आदमी ने, ऊपर से वो जो बैटिंग करता है, आई फील लाइक वो अपनी 50s बनाने के लिए करता है। आई एम सॉरी टू माय फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, बट यार ही इज नॉट द किंग, प्लीज डोंट गिव हिम दैट टैग। उसने कुछ नहीं किया इतना बड़ा, अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग रन्स। Scoring runs can be done by any individual, but contributing towards a team's victory is what matters at the end of the day. On paper Yeah, but- runs करके कोई फायदा बट नहीं है। करण वही है यार, लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। लाइक बैटिंग की तो बात नहीं कर रहे अभी हम, अभी तो फिलहाल उसकी कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। लाइक उसकी कैप्टनसी Too bad. मतलब बिल्कुल ही यार, लाइक इट्स लाइक ए स्कूल लेवल Yeah. कैप्टनसी भी नहीं है। लाइक हम Yeah, लोगों ने yeah. क्रिकेट खेली है स्कूल वूल में ही, छोटे लेवल पे ही, लेकिन उस पे भी जो कैप्टनसी होती थी उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता था यार। ये तो लाइक क्या कैप्टनसी कर रहा है। और अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज, पाकिस्तान के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो बंदा इनका बेंच से उठ के आता है वो हमेशा अच्छा खेलता है गेम। अब जो वो आया है, ये उसको लेकर आया मोहम्मद वसीम जूनियर टू, राइट? सो यार वो बंदे ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, तो मतलब इसका मतलब ये Yeah. उसको क्या बेंच पे बैठाने ले आए थे बस? यार मुझे ना उसका एक सिंपल आंसर लगता है कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि टीम इनकी ग्रुप्स में बटी हुई है, राइट? और हर Yeah. किसी को अपना अपना फेवरेट खिलाना है। कैप्टनसी की जैसे तेरे टॉपिक में रहूं मैं अगर, तो मुझे ये पता चलता है जैसे शाहिन शाह सीनियर है, राइट? आपको थिंक टैंक एक होता है जो ऑन द फील्ड डिसीजंस बनाता है, मतलब बिटवीन रोहित एंड कोहली। कोहली अगर कुछ सजेस्ट भी कर रहा है तो रोहित वुड टेक दैट सजेशन, राहुल कुछ बोल रहा है तो ही वुड टेक दैट सजेशन। देयर आर लाइक 4 or 5 कैप्टन्स और वर्किंग इन यूनिसन, राइट? सिमिलरली पाकिस्तान में भी ये लोग पीएसएल जब खेलते हैं, मतलब आई थिंक 3 or 4 तो आई कैन थिंक ऑन टॉप ऑफ माय हेड जो उनके पीएसएल टीम्स के कैप्टन है, मतलब दे हैव द क्रिकेटिंग ब्रेन्स बट दे आर नॉट प्लेइंग द वे दे शुड। एंड sometimes Babar, when he's lost in terms of his captaincy decisions, I don't think there is anybody who helps. Unfortunate to say this, but out from the outside it looks कि वो deliberately चाहते हैं कि वो fail हो। Yeah, But I don't think sorry, go like ahead. in their playing 11 they have a cricketing brain. Like it's not like Yeah. somebody I can say we like he reads the game well. Like even like game presence wise when they are doing Yeah. their own
role that when they're playing like either batsman and bowler. I don't feel like anyone has that game present. Rizwan could be some of the Yeah, innings I've seen, but besides that, like even Shaheen Shah Afridi, it's just like if he strikes with the new ball, then only he's deadly. ऐसा नहीं है कि वो आके तुम्हारे को game वही inside दे के like, and they are young too, so I'm not sure if it's lack of experience, but यार यंग यंग वाली का तो बात मैं तो कह नहीं ठीक सकता, है नहीं पता नहीं या है, एज एज फैक्टर पे मैं जो कमेंट नहीं हमारे को करूंगा। दिखती है, चलो yeah. यंग नहीं, इन क्रिकेट बोल दो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में nobody is young, only Shahid Afridi is young. So Yeah, Shahid but Afridi, staying Shahid on the Afridi, yeah. sorry तू अपना thought Shahid Afridi is younger than Shaheen Afridi, apparently. तो भाई उसी को लिया वापस आई थिंक वो भी अच्छा कर लेगा कहीं और से हाँ, बट यार मैं एक एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूँ कैप्टनसी का लाइक व्हेन वैंडर यूसन एंड क्लासन वर बैटिंग इन्होंने ऑलरेडी 2 विकेटें आउट कर ली थी प्रेशर इज ऑन भाई दैट इज द टाइम व्हेन यू ब्रिंग योर टॉप बॉलर्स बैक ताकि और प्रेशर बने 2-2 ओवर के लिए ही सही आप लेके आओ बट ही डिडंट ऊपर से मेरे को एक और चीज जो बड़ी बुरी लगी वो ये था कि भाई आपने वसीम राइट हम्म, यस ही केम उसने अपने पहले ओवर में विकेट ली है सेकंड ओवर में उसको 2 चौके पड़ गए थर्ड उसको ओवर ही नहीं दिया लाइक यार मैं वही कह रहा हूँ, कैप्टन उसकी कैप्टनसी के ना 100-200 पॉइंट बन जाएंगे. एंड यू नो राइट, मैं और तू वो उन व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं जहाँ पे हमें क्या क्या लाखों पॉइंट मिल जाएंगे. कैप्टनसी तो इट्स लाइक टू मच, आई गेस. अब थोड़ा बहुत यार साउथ अफ्रीका के लिए बात कर लेते हैं. साउथ अफ्रीका का आई सॉ द पॉजिटिव कि एटलीस्ट यू नो लाइक जैसे इंग्लैंड और पाकिस्तान इतना लाइक यू नो गंदा खेल रही है, लेकिन दे हैड अ गाय who said like, okay, I'll take one end, I'll, you know, Aiden Markram, he took the responsibility. And you know, I didn't realize that he actually won the under 19 World Cup for South Africa. That's why they Yeah, rate him really high for his yeah, captaincy skills and all. So Aiden Markram, he took responsibility और उसने एक end अपना cover करके रखा, तो at least you know there was a partnership and all that stuff going on. But I will still say कि South Africa का एक ही weak point है, क्योंकि अब हमारे साथ उनका गेम आने वाला है. I feel कि उनकी यार वही, अगर पहले हम 3 विकेटें अगर उनकी जल्दी गिरा दी ना, bro, we can wrap them up. We can Yeah, wrap them yeah, up. Yeah, but just coming back to South Africa, जैसे हम इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद भी बोल रहे हैं, like 3 teams who are looking like they are here to win and they are looking as a collective unit: India, New Yeah, Zealand, South Africa. South South Africa. Africa, Like exactly. honestly, South Africa, I'm not sure, like क्योंकि in maybe because of like the back home politics and like their captain. They felt like previously a team that is falling apart, but they have just come with like a force to reckon in this tournament, and they are Yeah, looking like okay, they mean business. yeah, पहले 2 मैच में bowling was okay, but now their bowling has picked up so much. right. Uh, exactly. so like really, I'm like as a viewer also when South Africa is playing, New Zealand is playing, I want to watch those matches because just like how yeah. they're playing on field like as one collective unit, it's nice to watch. Right. Hmm. यार Yeah. मैं पर एक एक चीज हाईलाइट करूंगा एंड आई फील लाइक दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गुड ऑन साउथ अफ्रीका's पार्ट नंबर 7 इज मार्को यानसन I Yeah. I don't know on tricky tracks if he's your ideal number 7. So I feel कि उनकी उनकी वो बैटिंग जल्दी एक्सपोज हो सकती है अगर किसी दिन ट्रिकी ट्रैक्स पे उनके टॉप ऑर्डर नहीं चले तो आई डोंट थिंक सो यू नो लोअर हाफ कैन डू दैट एक और पॉइंट करण बिल्कुल ठीक कह रहा है ऑन दैट. आई नो दे आर लुकिंग रियली स्ट्रांग, बट साउथ अफ्रीका, लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी तक किसी भी टीम के ब्रूटल फॉर्म में उन्हें मिली नहीं है. फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड एंड इंडिया, राइट? तो वो मुझे लगता है दैट वुड बी देयर स्टर्नेस्ट टेस्ट, जब जब दे विल मीट न्यूजीलैंड एंड देन दे विल मीट इंडिया. दैट वुड डिसाइड देयर फेट कि एज टू हाउ दे फेयर इन बिग मैचेस. मतलब देयर वुड बी बॉलिंग अटैक्स. ऑब्वियसली मार्को यानसन ने इंग्लैंड को बहुत मारा, and he Hmm. was playing decently against Pakistan as well. But I would really like to see how he fares up with Matt Henry, Mitchell Santner, and then Jasprit Bumrah, Mohammad Shami. I, साउथ I, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मैच हो गया वो है ना या वो भी हो हाँ, yeah, but नहीं, that was the वो first तो second loss जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था. राइट राइट but I ओके understand, Yeah, but I understand Abhishek's point, because पता है इंडिया और न्यूजीलैंड आर द ओनली टीम्स की जहां पे आपको 5 के 5 बॉलर बहुत स्ट्रांग मिलेंगे. राइट strong मिलेंगे यार. बाकियों में क्या है, आपको रूम मिल जाता है, सारे आउट ऑफ फॉर्म. और मेन ऑफ इट, साउथ अफ्रीका की बैटिंग को इतनी डीप नहीं है, बट दे आर जस्ट रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट एवरी बैट्समैन ऑफ द टीम इज इन Yeah, फॉर्म, yeah, exactly. राइट? और यार आई गेस जैसे बॉलिंग है, अभी इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया को भी खेल लिया, ऑल देयर बैटिंग गॉट एक्सपोज, तो
We should not just say Exactly, like yeah. South Africa. It's just like you're playing a quality bowling That attack, is what. and That's the from number 1 till number 11, everyone would be tested. Amazing. yes. Yeah, सब specialist हैं. Makes sense. Yeah, so I guess it was a very good game, at least first game of the World Cup, and I'm expecting कि कल भाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का गेम भी बड़ा But क्लोज होएगा. what was your highlight of this Pakistan South Africa match? One No, highlight. Nawaz bowling the last over और getting hit for 4. वो बेचारे को क्यों आगे कर देते हो हमेशा और फिर उसको स्केपगोट बनाते हैं. उसकी गलती नहीं थी. बॉलिंग को आप वो नहीं कर सकते. That's I would just want to say. Yeah. How about you, Kush? What was the one highlight of this match? यार मेरी हाईलाइट तो वो थी कि वो जो बबूमा ने जो सेलिब्रेशन किया था, मुझे ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप जीत गया बबूमा. भाई Yeah. किसी तो कूद के आया वो आगे. That I've been watching that on Instagram, TikTok, man. That was like my highlight too. The way he just like Yeah. kept running from behind He- or just जैसे वर्ल्ड कप जीत गया भाई, खत्म हो गया वर्ल्ड कप. ये मेरी हाईलाइट थोड़ी कंट्रोवर्शियल है. मेरी हाईलाइट थी डीआरएस. दोनों ओ decisions मैं जो मुझे पता हुए. कौन सा बोल रहा था. दोनों मैं कह रहा हूँ रसी एंडरसन का भी और Yeah. तबरेज शामजी का भी. दोनों दोनों ही. बेकार तो हैं. या मुझे ऐसा लगता है हिसाब बराबर हो गया उधर दोनों की तरफ से. हाँ. पर क्या तो भालू को but स्प्लिट सेकंड के लिए कुछ हुआ था कि मिस हो रही थी फिर लग गई थी. क्या हो गया था यार भाई? वो मैं आईटी वाले को IT में तो थोड़ा अच्छा समझाना था. पड़ेगा. हाँ, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था ना यार. सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था. माइक्रोसॉफ्ट was updating the software. Yeah. चलो. Okay, so I guess let's wrap this video up. So here we are signing off, guys. Please like, share, and subscribe. We'll be back after the Australia versus New Zealand game. Okay, bye, guys.